Hello, Assalamu alaikum and good afternoon. मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं Sports and the Airwise app. Our continued coverage of the ICC Men's World Cup 2023 from India continues. And so does our journey right here in the pavilion. I'm joined in the pavilion by four great cricketing minds, four former captains of Pakistan, four very naughty people, because while I'm giving my intro, they're having too much fun. And I want to laugh with them, but I can't. But I'm going to introduce these guys to you. I've got the young, the dynamic, dropping pearls of wisdom, the ever so fit, Mr. Shoaib Malik. Shoaib, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Good afternoon. Good afternoon, everyone. With that, Mr. Dependable, the most successful Test captain in Pakistan's Test cricket history, the man who refuses to give up on his naans and parathas, Misbah ul Haq. Good morning and good afternoon, Misbah. How are you today? Sorry. तुम्हारी आंखों से ही मुझे डर लग रहा है, जिस तरीके से तू मुझे देख रहा है, जैसे तू निहारी को देखता है. सही है. I can take that liberty, brother. लग रहा है आज नाश्ता साथ में करके आए हैं. आज नाश्ता नहीं किया actually. With that, I've got the man known as a man of crisis back in the days when he played for Pakistan. Used to run really fast between the wickets and is also very fast in a lot of other things. Also known as a silver fox on the pavilion, I've got Moin Khan. Moin, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Assalamu alaikum, everyone. Good to have you here, Moin. Thank you. Like always. Looking very silvery, shiny. Good, nice, good Zara stuff. Nawazi hai. And the cricketing royalty in our pavilion, the king of all-rounders, the undisputed sultan of swing, and the inspirational figure in this pavilion. He inspires us every day to be better, especially how to control our diet intake. Wasim Akram. Good afternoon, Wasim. Good afternoon. Thank you very much for अस्सलाम जी सबको गुड आफ्टरनून. और ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है, कोई मेरी गल नहीं मानते. सुन लेंदे ने ये. अब नाश्ता मैं बताता हूँ आपको इसका. अब मैं आके फारिग बैठे होते हैं तो नोट ही कर रहा होता हूँ. पहले यानी खादे ने अनार, फिर अंगूराल गया, फिर एक केला ट्राई किया है, फिर उसके बाद मैंने आधी एक नान खताई लाया था. हमारा मेकअप आर्टिस्ट, थैंक यू, जबरदस्त लाहौरी नान खताई. मैं तो मीठा खाता नहीं, तो मैंने एक आधी से भी आधी चखी है, आधी इन्होंने खाई है. फिर उसके बाद टोस्ट मंगाए ने, कहना है मैं डाइट पे हूँ. फिर चाय पीती है. एक्चुअली डाइट है यार. सुने, कल से तो बेहतर है ना. या कंपैरेटिवली ग्रेजुअली करना होता है ना. बैलेंस हो रहा है. बैलेंस हर चीज को बैलेंस तरीके से हम वो करते हैं. हम लोग आते हैं यहाँ पे शो करने, जी स्टूडियो जा रहे हैं. ये आते हैं नाश्ता करने चलिए. All right, let's get to the business of the ICC World Cup, and this is what we have in store for you today. आज एक बड़ा मुकाबला है, आपकी स्क्रीन के ऊपर अब आ रहा है. ये सूरत हाल है. This is the first game, the only game that we have today. It's Australia versus South Africa. याद रहे, ऑस्ट्रेलिया अपना मैच इंडिया के खिलाफ हारा है और साउथ अफ्रीका अपना मैच जीत कर यहाँ पर आया. They played a blazing cricket in the last game against Sri Lanka. That's 400 plus runs that they put up. This is how it's going to go down today at 1:30 p.m. It's going to be Australia versus South Africa. लखनऊ से आप लोगों के लिए बराह रास्त आएगा. पॉइंट्स टेबल पे नजर डाल देते हैं. इस वक्त सूरत हाल पॉइंट्स टेबल पे, कल इंडिया ने अपना मैच अफगानिस्तान के खिलाफ जीता था और इस वक्त सूरत हाल पॉइंट्स टेबल की है कि न्यूजीलैंड इज राइट ऑन टॉप. ऑफ कोर्स उनका जो नेट रन रेट है पहले गेम की वजह से वो बेहतरीन रहा है. उसके बाद इंडिया है, तीसरे नंबर पे पाकिस्तान है, चौथे नंबर पे इस वक्त साउथ अफ्रीका है. डिफेंडिंग चैंपियंस इंग्लैंड 5वें, बांग्लादेश 6ठे, ऑस्ट्रेलिया 7वें, श्रीलंका 8वें, नेदरलैंड्स 9वें और फिर अफगानिस्तान 10वें नंबर पे है. नाउ इंटरेस्टिंगली, दिस इज गोइंग टू be a crucial game for Australia. They want to get some points up there. They're going to come back hard. And South Africa, well, they are looking a very dominating force in this World Cup. Let me start off by talking to our Lucknow में ये जो है मैच है, historical value है इसकी. हालांकि nobody's seen this pitch, Wasim. This is it's a newly freshly laid pitch, so we don't know what it's going to do. We are looking forward to the pitch report, which Wasim really looks forward to every night. कि कल सुबह क्या pitch report आएगी, उसके ऊपर हम बात करेंगे. Also historical reference to Lucknow, because पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मैच 1952 में लखनऊ में जीता था. It was the university ground at that time. This is a new ground, and I sometimes random stats.
आपके सारे जो सर्कल के जो वसीमा ने खोला हुआ था ना, जो वसीमा ने खोला हुआ था वो आपने पढ़ दिया, वसीमा ने पेज टर्न किया तो खाली पेज था। वो स्टैट्स पे मैंने जो आए हुए हैं लखनऊ के पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में, वो मैंने देखे ही नहीं है, because it's not relevant right now. You know why? So as much as you think that they're not relevant, there's a reason why I had to bring that in, because we have a feature about Lucknow coming up on your screen. There's a reason for everything. Beautiful, grand stadium there in Lucknow, but you had me at Korma. That was enough for me. पर अभी वसीम में आते हुए बड़ा जबरदस्त बताया, वो कौन से यहाँ पे लखनऊ के टुंडे के कबाब आप बता रहे हाँ नहीं, लखनऊ इज अ वेरी हिस्टोरिक सिटी, कैसे बनाता होगा वो सिटी, कबाब? और इनके नवाब, इनका खाना इज वेरी डिफरेंट। आई बीन देयर, वहाँ इनके ककोरी कबाब बड़े मशहूर हैं, वो उसमें खशखाश डलती है, अब उसको इंग्लिश में कहते हैं, आई डोंट नो, खशखाश वो डलती है जिससे मीट बहुत सॉफ्ट हो जाता है। अपेरेंटली द स्टोरी बिहाइंड इट कि जब नवाब इनके बूढ़े होते थे तो उनके दांत चले जाते थे, तो वो हैंस ये कबाब फिर उनके कुक्स ने ईजाद किए जो कि बहुत ही सॉफ्ट हैं। इट्स रियली सॉफ्ट। एंड अनदर फेमस थिंग ऑफ अपार्ट फ्रॉम हिस्टोरिकल वैल्यू, खाने की बात कर रहे हैं, टुंडे के कबाब वो बड़े फेमस है। इस लाइक टिक्की होती है कबाब की, आई थिंक मटन की होती है। बट मेरा क्वेश्चन था उनसे, एक बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन था, मैं क्या टुंडे का मतलब क्या होता है कि हाथ नहीं होता या हाथ नहीं होते, तो मैं क्या कबाब किਵੇਂ बनाਉਂਦਾ ਸੀ? Oh no, oh I don't want to know. I don't want to know. It was a valid question. Yeah, but I couldn't get the don't want to answer. know the answer to that. टेक्नोलॉजी बहुत आ गई, आंखों से Yeah, Tunda is quite famous from a long time. Yeah. All right, we're going to take a break here at this moment, but when we come back, we'll talk about South Africa-Australia clash. Don't go away. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं Sports and the Airwise app and our continued coverage of the ICC World Cup. And today we're going to Lucknow, where we have South Africa clashing with Australia. लखनऊ का ये स्टेडियम अब से कुछ देर पहले हम आपको दिखा रहे थे, उसके ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत पैकेज, एंड we've spoken about this earlier as well कि ये नया स्क्वायर है, नई पिच है जो बिछी हुई है। आइए इससे पहले कि हम गुफ्तगू स्टार्ट करें अपने एक्सपर्ट्स के साथ, let's take a look at the pitch. All right, there you have it. Wasim, your favorite bit? No, actually, this was a much better pitch report. Thank you, Hayders, and thank you, Mr. Badri. Main thing जो उन्होंने बताई है, एक तो घास कवर नज़र आया उस पर काफ़ी सारा, ठीक है, it might be a slightly brown grass, but grass is grass. उससे नया बॉल डेफिनेटली सीम करेगा पढ़ के, और उसने ये भी कहा मैथ्यू हेडन ने कि इट्स अ लो स्कोरिंग ग्राउंड। प्रॉब्ली पिच देख के शायद उसने मिसबा ये कहा हो। उसने जो सबसे इम्पोर्टेंट बात की है कि जैसे मुंबई का जो ग्राउंड है रेड सॉइल, वो थोड़ी सी इसमें उसका मिक्स है, डीएनए उसका है, तो वरीड है ग्राउंड मैन, इसलिए कि उसने कवर अभी उठाए हैं, तो बहुत ज़्यादा गर्मी है और ह्यूमिडिटी है, तो वो मॉइस्चर ख़त्म होने की वजह से चांसेस हैं कि बाद में हो सकता है ये स्लो खेले। तो इट्स गोइंग टू बी अ डिफ़िकल्ट डिसीजन फॉर बोथ द टीम्स, क्योंकि पिछला कोई इसका रिकॉर्ड नहीं है उनके पास, पिच जैसी नज़र आ रही है। अब इस पे वो दूसरा फैक्टर भी है कि बाद में स्लो हो जाएगी, देन व्हाट यू आर गोइंग टू डू। आई थिंक एक और जो मेजर फैक्टर होगा, ड्यू फैक्टर भी मेजर फैक्टर होगा कि बाद में कैसे क्वाइट हॉट देयर। जी बिल्कुल, अगर ड्यू फैक्टर है तो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि टीमें चाहेंगी वो पहले बॉलिंग करें। Fair enough. Right, Shoaib, win the toss and do what here? I think कोई मैच नहीं हुआ इस पे, तो इट्स बेटर टू बोल फर्स्ट, ताकि एटलीस्ट आपको थोड़ा आइडिया हो जाए, एंड लेटर इन द पार्ट अगर ड्यू आती है तो उसमें ये भी है कि एक तो आपके सामने टारगेट होगा, और बैटिंग अगेंस्ट द वेट बॉल रिलेटिवली इट्स अ लॉट इजियर। एब्सोल्युटली। जरा ये हेड टू हेड देख लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया बामुकाबला साउथ अफ्रीका, जो वर्ल्ड कप्स का इनका रिकॉर्ड है, 6 मैचेस खेले हैं ये लोग आपस में, ऑस्ट्रेलिया 3 मैचेस जीता है, साउथ अफ्रीका 2 मैचेस जीता है, और 1 मैच जो है इनका टाई है। सो ये आपके सामने विन परसेंटेजेस भी आ रही हैं, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। मगर हाल ही में मोइन जो सीरीज हुई, साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को 3-2 से हराया ओडीआई सीरीज में, बट ये सीरीज साउथ अफ्रीका में हुई थी, होम ग्राउंड एडवांटेज था। What do you think? How are these two teams positioned against each other? I think recent matches देखें तो नेचुरली नज़र आ रहा है क्लियरली कि साउथ अफ्रीका बहुत ऊपर है ऑस्ट्रेलिया से। पिछला मैच जिस तरह खेला साउथ अफ्रीका ने, आउटस्टैंडिंग वर्ल्ड कप का हाईएस्ट टोटल इन्होंने अचीव किया, टारगेट 428। ऑस्ट्रेलिया वेयर पिछला मैच अगेंस्ट इंडिया हारता हुआ आया, पहले बैटिंग कर रहे थे, कोई उनको क्लू नहीं मिला कि क्या टारगेट सेट करना, मुश्किल हो रही थी, कहीं भी कोई पॉजिटिव इंटेंट नज़र नहीं आया। ऑस्ट्रेलिया बहुत ज़्यादा बैकफुट पे नज़र आया, क्योंकि
बॉलिंग भी अच्छी हुई नो डाउट इंडिया की तरफ से, विद इन द विकेट्स बॉलिंग कर रहे थे, कॉन्स्टेंटली प्रेशर क्रिएट कर रहे थे, तो वहाँ मौका ही नहीं मिला ऑस्ट्रेलियंस को हिट करने का। यहाँ पे क्योंकि मैच हारे में उनके पास मुझे नहीं लगता कि कोई उसके अलावा कोई और चांस है टू अटैक साउथ अफ्रीका, क्योंकि साउथ अफ्रीका की जिस तरह इंटेंट हमने इस टूर्नामेंट में देखी है प्रीवियस अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया जो ये सीरीज जीते हैं एट होम, आई थिंक टोटली बैलेंस टीम